So, hi everyone, welcome to StudyIQ YouTube sessions evening रे जोटा में नहीं था and आज हम डिस्कस करबे MCQ जोटा कि Lino and La Niña ऊपर हम किसी MCQ डिस्कस करबे definitely that will be useful right चले फिर स्टार्ट करबे हमें so then चले फिर हम सेशन को स्टार्ट करबे टाइम बिना वेस्ट न करके हमें सेशन को स्टार्ट करबे राइट तो जो मैंने जॉइन करछो गुड इवनिंग टू एवरीवन चलो फिर चार्ट बॉक्स ओपन अच्छी तमने मध्य व्हाट यू कैन आल्सो चार्ट टू मी आंसर दे पर चार्ट बॉक्स करे बॉक्स ऑलरेडी बॉक्स रही ओपन यूट्यूब रे तमने कमेंट सेक्शन रे कमेंट मध्य कर पर गुड इवनिंग दिबांशु सस्मिता संजीव आज यूजुअल बहुत लंबा छोटा मैसेज रही समस्त चलो फिर हम स्टार्ट करवा आज जो सेशन रहिबो ये हाफ एन आवर सेशन रहिबो राइट दिस वुड बी हाफ एन आवर सेशन रहिबो तुम मनकर and this half an hour session रे हमें ट्राई करिबा कि एलिनो एंड लालिना ऊपर जो क्वेश्चंस रही से क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करिया फर्स्ट क्वेश्चंस रही एलिनो ऊपर क्वेश्चंस रही कि it characterized by abnormal warming of the surface of water in the eastern equatorial Pacific Ocean से कहूची it strengthens the water circulation को strengthens करे it associated with weaker trade winds ना ऑप्शन रही तुम तले देखि परियो तुमने ऑप्शंस गुड इवनिंग दीप्ति एज वेल एंड मुझे कहीकि रखे कि जोग्राफी ऑप्शनल्स राइट आज ऑलरेडी तुम यूट्यूब रे स्टडी इक्यू प्लेटफॉर्म रे ऑलरेडी यूट्यूब रे देखियो पेपर 1 एंड पेपर 2 रो एनालिसिस ऑलरेडी अपलोड करा जाइछि दो दिस इज मतलब अपलोड ही जाइछि एंड दोज हु विश टू हैव द ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल्स दे कैन opt out in our platforms हम कहि पर दैट मींस इन स्टडी इक्यू प्लेटफॉर्म्स रे कहि परबा they can easily opt out right we have just started the phrase new batch from the starting MK geography optionals so let's begin with the session तो फटाफट हमें देखिबा आंसर कोन आसुइ तमनकर आई एम आल्सो वेटिंग फॉर द आंसर तो फटाफट देखिबा से कहूची इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द abnormal तो देखो सब बेले एलिनो एंड लालिना को केमती मन रखिबो कि फटाफट तुम मैंने जदि यार सब बेस्ट मु कहबी कोन मन रखिया पे हेले तुम जदि कहबे सर बेस्ट एलिनो लालिना मन रखिया पे टेक्निक टेक्निक इज दैट आज सिंपल आई विड जब तुमको बेसिक क्लासेस रे कही था कि दिस वन इज साउथ अमेरिका तो जेतरा हमें एलिनो कथा आसे दैट मींस वार्म वाटर हियर राइट एपटे रही तुम ऑस्ट्रेलिया दिस साइड इज योर ऑस्ट्रेलिया तो आई मीन्स एलिनो टाइम रे तुम एठी कूल वाटर रहिबो हियर इट विल बी कूल वाटर तो ये कौन रहिबो जेतरा एलिनो कंडीशन मु कहूची राइट व्हेन वी टॉक अबाउट द एलिनो कंडीशन इट वुड बी वार्म वाटर तो आई मीन्स वार्म वाटर इक्वल टू लो प्रेशर ताले अपर एटमॉस्फेयर कोन हिजबो हाई प्रेशर हिजबो एठी कोन हिजबो ग्राउंड रो हाई प्रेशर अपर एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर हिजबो एयर will circulation will be like this the circulation of air will be this so this is the diagram of Lino jodi dekhibo because this is low pressure means air will ascend making the upper atmospheric high pressure the air will diverge here and it will descend then air will blow like this I mean this is what आम कह सर्कुलेशन एलिनो टाइम रे जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जहाँ को आम कहूँ व्हाट वी कॉल इट व्हाट दैट इज द साउदर्न ओशन ओसिलेशंस जहाँ वाकर सर्कुलेशन नेगेटिव फेज बोली आम ताकू कही था दैट मीन्स ए फेज रे आम जदि कहबा ताली से कहूँ abnormal warming कोठी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एटा देखो तुम ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एटा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट देन सब कुछ इट स्ट्रेंथन द वाटर सर्कुलेशन ना ये स्ट्रेंथन करेनी लालिना वाटर जो ध्यान से सुनिबो ये जो वाकर सर्कुलेशन एटा होची वाकर सर्कुलेशन रो नेगेटिव फेज जेहेतु नेगेटिव फेज दैट मींस ए स्ट्रेंथन करिवो नाही इट विल वीकेन द सर्कुलेशन द स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग तो जदि 2 रॉन्ग होची देन हम देखिबा इट एसोसिएटेड विथ आम कहबा वीकर ट्रेड विंड डेफिनेटली इट वुड बी वीकर ट्रेड विंड सो 1 and 3 विल बी द आंसर कारण ये तुम देखिपर द सर्कुलेशन जो एमती होची दैट मीन्स ट्रेड विंड कौन हो वीक होची कारण ट्रेड विंड्स तुम जो थाए ये वीक हो ट्रेड विंड विल बी वीकर ट्रेड विंड सहित एसोसिएटेड थाए सो इट्स गोइंग टू बी 1 and C दैट मीन्स 1 and 3 देखिए तुम आंसर कौन आसी तो आंसर कहीं बी बी दीप्ति इज गोइंग फॉर बी संजीव एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर बी वाह बहुत बढ़िया तो देखिए आंसर सो वी विल गो आर आंसर इज बी बहुत बढ़िया तो आंसर बी रही तो आंसर एक्सप्लेनेशंस तुम मैंने देखिपर देयर इज आल्सो एक्सप्लेनेशन आंसर एक्सप्लेनेशंस रही देखा एक्सप्लेनेशन कौन रही एक्सप्लेनेशन कहूँ ठीक अच्छे नॉट स्ट्रेंथन वीकेन जोटा अच्छी आम देखी यहाँ ठीक अच्छे तो एक्सप्लेनेशन ठीक अच्छे बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन ठीक अच्छे गुड इवनिंग
समीर बहुत दिन पर तुमको देखुची मु राइट कंटिन्यूटी मेंटेन कर लालीना तो ये एक्सप्लेनेशन तुम थिला नाउ वी विल कम्स टू द लालीना लालीना कोन से कहूची लालीना इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्ट्रेंथन द ट्रेड विंड्स को स्ट्रेंथन करता है कूलिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है इंक्रीज ऑफ वेलिंग ऑफशोर ऑफ पेरू देखिबा ताले देखियो नाउ कम्स टू बी 2 नंबर क्वेश्चंस को हम देखिबा टू नंबर क्वेश्चंस नंबर 2 देखो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2 देखो डायग्राम मु ड्रॉ कर दूची डायग्राम ड्रॉ करले तुमन को इजी हे डेफिनेटली तमे फटाफट आंसर दे परिबो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन राइट सो हियर वुड बी साउथ अमेरिका हियर विल बी योर ऑस्ट्रेलिया राइट हियर वुड बी से कोई कौन कंडीशन होचे लालीना दैट मीन्स हियर विल बी हाई प्रेशर दिस साइड विल बी योर दैट अच्छा सॉरी लालीना कोई बा there would be low pressure sorry so here would be high pressure right upper atmospheric high pressure upper atmospheric low pressure the air will ascend air will move air will down air will move like this so this would be the atmospheric circulations the trade wind will blow like this so this would be the trade wind ये तुम trade wind रहिबो तो जेतर लालीना से एठी रहिबो warm water this side would be water will be warm here water will be cool तो ये तुम आंसर दे परिबो फटाफट राइट दैट मीन्स एठी से कहूची ताली से कहूची देखो कूलिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन सो हियर इज कूल वाटर ऑलरेडी हम लिखी कूल वाटर ताली एटा ठीक अछि स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स एलिनो टाइम रे जदी वीक होची दैट मीन्स एठी मु डबल गारो देइची स्ट्रेंथनिंग होची दिस इज आल्सो करेक्ट हम कहबा इंक्रीज ऑफ वेलिंग ऑफशोर रे ऑफ वेलिंग हबो एंड हियर वुड बी जेतले तमरो स्ट्रांग दैट मीन्स हम कहबा स्ट्रांग ट्रेड विंड जदी स्ट्रांग हबो ऑफ वेलिंग हबो ही हबो from the thermocline zone the water will upwell तादर एठी तुमको फिशिंग अमक डमक ये सब देखा जबो सो चलो फिर आंसर देखबा तुम मनकर कोन रहै छी सो आंसर डी कहूची दीप्ति संजीव इज एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर डी शत्रु इज गोइंग फॉर डी देखबा ताले आंसर बहुत बढ़िया रहै छी आंसर बहुत बढ़िया आंसर डी तो एवरीथिंग इज करेक्ट तो आंसर एक्सप्लेनेशंस मध्ये रहै छी एक्सप्लेनेशन ये सब आंसर तुमको कोठी मिलिबो definitely you will get this kind of questions ये सब तुमने कोठी पाइबो मोर जो टेलीग्राम चैनल अछि सेठी तुम टेलीग्राम चैनल रे पाइछबो चलो फिर नेक्स्ट आसीबा में which of the following is correctly explains the southern ocean oscillation good evening satru right southern ocean oscillation which of the following is correctly explain the southern ocean oscillation which of the following is correctly explain the southern ocean oscillation correctly explain the southern ocean oscillation correctly explain करे questions number 3 southern ocean oscillation ये लिखा है seasonal reversal of the wind over India fluctuation of the atmospheric pressure between Tahiti and Darwin the movement of warm water current in Atlantic oceans cooling of Indian ocean देखिए आंसर कौन आसुची 3 नंबर बी कहूची दिबांशु बी कहूची संजीव सस्मिता दीप्ति राइट मैं तो समझते तो बी कहते दैट मीन्स एस द आंसर इज बी बहुत बढ़िया दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन ताहिती जोटा आम कहबा व्हाट द ताहिती कोठी होची सेंट्रल पैसिफिक ओशन सो ताहिती कोठी सेंट्रल पैसिफिक ओशन एंड डार्विन कोठी ऑस्ट्रेलिया एंड डार्विन कोठी आम कहबा ऑस्ट्रेलिया सो दैट्स द रीजंस आम कहि परिबा the fluctuations between Tahiti and Darwin that will be answer आम कहबा
तो इट वुड बी ताहिती सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ये रहबो तुमरो डार्विन वेस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया रे एटा एक्जेक्टली ईस्टर्न रु सेंट्रल को हमें सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक एंड दिस वुड बी वेस्टर्न पैसिफिक that is correct. Now comes to questions number B, sorry 4, question number 4th questions. During El Nino events, which of the following is most likely in India? Most likely in India. During El Nino events, which of the following most likely in India? Most likely in India. कोटा इंडिया तुमको लगुच most likely is going to happen in India. Yes, answer देखिवा. Try करो. During El Nino event, which of the following most likely in India? India कौन हवा को तुमको लगुच कि this is most likely to be happens? कौन है फोर्थ नंबर बी चलचे बिलो एल इलो इट वुड बी बिलो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल कहीं आर रीजन किए कहबो कहीं हम रीजन किए कहबो देखिबा रीजन किए कहबो एक्सप्लेनेशन किए दबो देखिबा में कहीं की एलिनो टाइम रे इंडिया रे आम कहबा मॉनसून वीक ही थाए और जो रेनफॉल ही थाए आम कहबा कम ही थाए एनीवन हु विल एक्सप्लेन दैट बहुत थर मुझे एक्सप्लेन करी आई हैव मेनी टाइम्स आई हैव डन इट राइट आई हैव डन इट मेनी टाइम्स मुझे बहुत थर कही कि व्हाट इज द रीजन्स तार रीजन कौन मुझे बहुत थर तुम को डिस्कस करी एंड आई होप दिस टाइम्स तुमने कह कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. Next, masculine high less high pressure. Yes, both weakening of masculine high pressures. तो बहुत बढ़िया शत्रु explanation देइची कि weakening of masculine high pressure, the weakening of Eastern African high pressure. If the weakening of Eastern African high pressure will be there, if the weakening of masculine high pressure will be there, suddenly the push effect of the moisture from the southern Indian Ocean to the आम कहबा ए रीजन को आम कहबा काफी सेटा कोन होइछो लैक करिछो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस. हाँ ओके नेक्स्ट आसीबा क्वेश्चंस नंबर 5. Consider the following statement regarding the El Nino regarding the El Nino regarding the El Nino. बहुत बढ़िया चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया चलो 5 को आसो 5 को ये क्वेश्चन सब तुम को मिल मोर जो टेलीग्राम चैनल अच्छी जो मैंने जॉइन भी करन मो टेलीग्राम चैनल हूँ डेफिनेटली मुझे कौन कहि मो टेलीग्राम चैनल वेस मेंटर रही जॉइन कर दियो एंड स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल दीटा चैनल जॉइन करके यू कैन गेट द PDF राइट से तुमने पाई परिवो. 5 number. El Nino stands for ENSO stands for El Nino Southern Ocean Oscillation. It includes both the oceanic and atmospheric components. It occurs in Indian Ocean. बहुत बढ़िया देखियो आंसर चलो ये सब क्वेश्चंस
राइट मो मतरे ये सब क्वेश्चंस इजीली पिला माने करि परिबे बिकॉज़ तुम माने इजीली करि परिबो many time I have discussed many times I have discussed in this platform YouTube platform कहि के कि चिल्लै चिल्लै थकी जाई छी I hope कि these things are pretty easy things तो right obviously एलिनो लालिना कोठी हुए Pacific Ocean does not have any मतलब relation अछि मु एमती कहबेन कि that does not have any impact on Indian Ocean or the Indian climate I would not say but I would say certainly this does not occurs in Indian Ocean this occurs in Pacific Ocean but will have impact on the Indian Ocean or the Indian what I mean subcontinent upar impact padibo but that does not mean this is occur in Indian Ocean so clearly this is you can strike it down and the 3 got cancelled 3 got cancels obviously it would be oceanic at atmospheric how did it what relate to the ocean I means the surface temperature of the oceans as this one is includes both oceanic and atmospheric components the oceanic component here is the sea surface temperature that would be what sea surface temperature and when it comes to the atmospheric component that means the atmospheric circulation part that atmospheric circulations I would say what better to say it would be east west circulation it would be what east west circulations that zonal circulation I would say what that zonal circulation will impact the meridional circulations the what meridional circulations as a 3 got cancelled and 1 and 2 will be the answer yes 1 and 2 is the answer now we will comes to the sixth one next questions and आज तुमने continuity maintain करी रखी था everybody you have to maintain the continuity right you have to maintain the continuity जो continuity होची you have to maintain that continuity okay try to maintain the continuity and this is my suggestion is that do have target make your target achieve the target each day mu sabuବେଳେ କୁହେ each day small target you have to achieve small target nothing else is more necessary only simple you have to do the small target achieve it and feel the confident matlab be confident I would say next question number 6 which region experience heavy rainfall during El Nino which region experience heavy rainfall during El Nino whether it's Australia, Indonesia, India, Peru, Ecuador, etc. Go. 6 number majorities candidates A and B आसुची दीटा आंसर आसुची मु देखुची 6 number दीटा कहीं आसुची किछि A कहउछन्ते किछि B आसुची देखो लालिना टाइम रे आर मु कहि दउछि तुमको काहे कि जार कंफ्यूजन होचे ना देखो कंफ्यूजन दूर हो जाओ फटाफट कंफ्यूजन दूर कर दउछि मु सबले फिगर ड्रॉ करिवो लेट इट ड्रॉ द फिगर फास्ट लेट्स से ऑस्ट्रेलिया इज हियर राइट ऑस्ट्रेलिया इज हियर तल से कोन कहिछि कंडीशंस कोन एलिनो that means elina means low pressure here because warm water will be here cool water will be here that means this region will be high pressure और जदि high pressure होची rainfall कमिबो ना जोठी low pressure अधिक सेठी rainfall अधिक ताले जोठी low pressure means what more rainfall एठी कोन less rainfall एठी कोन रहबो less rainfall that means से कोन कहिछि so this is the reason the answer would be what answer would be ଆଉ जदि एटा लाली ना ही थांता तो एटा एठी की पळे आसीबो एटा एठी की पळे आसीबो right that is why this would be A is the answer so diagram through the diagram you can do the answer right only solution is do the diagram fast जेते बळे एलिनो लालिना क्वेश्चंस आसीबो जे तुमको डाउट लागुची फटाफट डायग्राम ड्रॉ करिवो जो डायग्राम्स मु तमन को बारंबार कहिची do the diagrams get the answer fast now question number 7 this is silly mistake you have done Satru and silly mistake is generally samaste karanti and I hope ki you guys will improve right don't be sorry but I hope ki you have improved so much over the period of times I have seen matlab a few candidates that has developed over the period of time so much of drastically changes and the improvement has been done and for that definitely mukabi tar jo dedication Satru that has shown over the years right and that is great I hope कि other candidate also learn from him as well जदियो मतलब ये platform रे कहिबा कथा no but this is example I am setting if somebody is coming from the service after doing 15 years of the job then coming back to the competitive life again sit back for the 15 hours 10 hours that's always a challenging one
Now, so that's why we need to have continuity, and continuity is the key of success. So start doing that. Okay, now comes to 7, question number 7. La Nina generally causes what? La Nina से कुछ generally La Nina causes what? Generally La Nina causes what? Drought in Australia, flood in Australia, no effect Australia, cooling of Pacific Ocean only. 7 number. चलो बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट. नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चंस को आसीबा. नाउ वी विल कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8. Uniformity of the answer shows that everybody is having the clarity of thought, the clarity of concept, because everybody is having same answer. That does not mean everybody is but following the heart. So I don't believe that. I believe that everybody now gradually over the period of times you guys are definitely improving your thought, clarity, concept, everything is improving with that. देखो ऑनेस्टली कह को गले कि आई डू प्रेज ऑलवेज मतलब माय पीपल्स एंड द स्टूडेंट्स ऑलवेज मु प्रेज करे व्हेन दे पुट देयर एफर्ट. फालतू रे मु प्रेज करेनी, आज जाए तो मु करेनी. एंड बेकार का जो कहते ना कि बेकार का शाबाशी देना, हमने तो किसी को नहीं दिया आज तक, हमने किसी का नहीं दिया. तो जो जेन्युइन बंदा है लगता है कि यार मतलब बहुत एफर्ट दे रहा है, एंड वो दिखता भी है. ऐसे नहीं कि मतलब हाँ एफर्ट दे रहा है दे रहा है दे रहा है, दिख नहीं रहा है, दिखना भी चाहिए. अगर somebody is putting the effort ना, that will reflect somehow. And always my blessings and kindness with all of you. I hope everybody will and this time जो मैंने continuously session को देखुँ किसी दिन है मु देखुँ, I hope everybody will qualify the prelims and that would be greatness, right? सेटा मु देखिबि कि this times I hope के तम माने मध्य बाकी जो माने अच्छे तम माने मध्य क्लियर करिवो. चले फिर 8 number है गेला आंसर कौन है जे क्वेश्चन कौन पचारछि. वाकर सर्कुलेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाकर सर्कुलेशन? वाकर सर्कुलेशन, ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन ओवर इक्वेटोरियल पैसिफिक्स, नॉर्थ साउथ सर्कुलेशंस, आटलांटिक. ये तो देखो आ किछि नाही, तो प्रथम तो आंसर तो रही कौन कहबी, आंसर तो जानी सार्थो तो माने तो ये तो सब मतलब किछि नाही, एटा गोटे तो अछि आ कौन. चलो नेक्स्ट. आज हाफ एन आवर सेशन रही एंड जो मैंने भी पर रेकर्डिंग देखुवे लाइव देखुंटे, I will urge everyone to be very consistent, to be very dedicated. मतलब you have to show the dedication because there is obviously the paucity of the times and there is time is running fast as well. So as the time runs fast, so you have to also maintain that as well with the times if you want to be in the race. Otherwise he will be somehow lag behind of the race. So if you wants to maintain that pace with I would say the time, then you have to also run fast. चले फिर चलो 9 number questions. The question is they're fast, do fast. Which of the following changes occur during it's a typical El Nino event? Whether there would be thermoclines become deeper in the Pacific Ocean and off-whaling decreases along the South American coast, the fisheries offshore decline. 9 number is D. So it's Dipti, Satru, Devangshu, Samir, Sasmita, Sanu Prasad, Sanjeev. Everybody is going for D. I mean देखो आंसर कौन कुछ से कुछ हाँ 8 है तो ठीक होची. A is correct. तो 3 is correct. Fisheries down ହେଇଯିବ and off-whaling decreases. Definitely off-whaling decrease हबो. से कोइछि off-whaling केतले बढ़े?
Upwelling will increase during the time of La Nina, because that times during the La Nina it would be strong trade wind will be there, and because of the strong trade wind that will lead to the more upwelling because of the displacement and the movement displacement of the warm surface water towards the western Pacific Ocean under the influence of trade wind. So that will be there. So yes, both body answer, great answer to all of. Nice one. Next we will comes to the question number 10, right? Question number 10. The questions number 10. Consider the following statements. La Nina strengthen local circulations, El Nino increases pressures over the Pacific Ocean. देखो तुम मने. So go through this statement and the last two MCQ is required. The मतलब time कम अच्छी मो पाखरे because I need to finish 8 8 मते खत्म करियर अछि because geography optional also there, and जो माने geography optional तो मन को दरकार, those who wish to have the geography optional basic to make advance है कि we have already started the classes in the StudyIQ platforms live sessions. Every session will be live and recorded unlimited तमने देखी पारो recordings of the classes, optional classes. Every classes note has been provided. Most welcome, Dipti. And ये जो दीप्ति, सस्मिता, देवांशु, शत्रु, they have been very मतलब मु कहबी what continuity maintain करके रखी, and ये सोनू प्रसाद, these guys are maintaining so much of Smaraki as well, Baral Smaraki Baral as well. They are maintaining continuity. And मु खाली कहूनी कि मो क्लास जॉइन करो, समस्ते जो भी टीचर आमर पढ़ाउछन्ते समस्त को जॉइन करो. सी मतलब प्रत्येक दिन किसी ना किसी तुमको गेन हबो, राइट. एंड another important जिनस होची गोटे ओपनली हमको रिवीजन करे पे सेशन मिलुचे. सो दिस सेशन इज व्हाट, दिस विल बाय डूइंग द एमसीक्यू एलिनो लालिना ऊपर क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप हबो, रिवीजन हबो, एमसीक्यू मिलिला आठो बेटर कोन दरकार. सो डू दिस वन, बहुत बढ़िया. तो आंसर से कोची एलिनो स्ट्रेंथन वाटर सर्कुलेशन आमे प्रथम रु पढिचे ना, कैंसल. तो वन गॉट कैंसल, वन गॉट कैंसल, वन गॉट कैंसल, बी इज द आंसर. तो बी जति हम देखबा के गोटे ए आंसर देछि 10 नंबर. एटा कोन कहिछि, एलिनो स्ट्रेंथन वाटर सर्कुलेशन बा, ओ सॉरी लालिना अछि, ओ सॉरी मु भूल पढिछि. अच्छा लालिना तालटा ठीक अछि. Then El Nino increases the pressure over eastern Pacific Ocean. El Nino increases pressure ना decreases pressure. तो 2 got cancel, 2 got cancel, 2 got cancel, 1 तो ठीक अछि. 3 टा देखिबा, La Nina is associated with cooler than normal sea surface temperature in the ये मतलब ये भी गलत, ये भी तो गलत है जो. तो आंसर कौन आछि देखिबा तुम मन करो. अच्छा एठी कौन कहिछि देखो, La Nina is associated with cooler than normal sea surface temperature in the eastern Pacific Oceans. Cooler than normal. हाँ मतलब नॉर्मल भी कही परिबा, में नॉर्मल भी कही परिबा, बट वार्म भी तमे ताकू कही परिबा ना, वार्म भी तो कही परिबा, राइट. वार्म भी कही परिबा. तो जदि 2 तो कैंसिल हो जाउची, सारा सारा में देखि देले कि 2 तो कैंसिल हो जबो, ताले 1 इज गोइंग टू द आंसर. अच्छा जदि एठी से कोची एटा देखो कूलर देन नॉर्मल, आई मीन्स कूलर देन नॉर्मल. एक मिनट आउट के वेरीफाई करिबा. La Nina is associated with cooler than normal sea surface temperature. को टाइम रे La Nina is associated, La Nina टाइम रे तो कूलर रहिबो ना, कोठी ईस्टर्न रहि छै ना, ईस्टर्न रे तो La Nina टाइम रे कूलर रहिबो, कूलर देन नॉर्मल मतलब ठीक अछि ताल. हां ओके ठीक अछि. लास्ट वन ठीक अछि, ठीक अछि, ठीक. चल लास्ट वन, टाइम नहीं मो पाखरे, तमने बाकी सॉल्व कर देबो, बाकी मु देई देबी तमने देखि देबो. थर्मोक्लाइन जोन मु कहि कहि थकी छी, देखि दियो, देखु देखु आंसर हे जिवो. मु तो एते थरा कहि छी जे कोनी ना, मु एटा खाली वेरीफाई करथली जो कूलर देन नॉर्मल टा लिखाइ छै, एटा वेरीफाई करथली ठीक कि नहीं. नेक्स्ट, गुड इवनिंग नम्रता. And the last questions of the day.
कारण आमर थाए 8टारू 7टारू 8टा थाए सेसन तुम जानते यूट्यूब मु नहीं आसे बट आज जेहेतु मोर किसी काम रही मुझे बट मुझे लेट आसली अध घंटा सेसन नहीं आज बाकी दिन करे आम कौन अधिक आवर सेसन नहीं पार जहाँ भी हो तो आज हाफ एन आवर सेसन थिला बहुत भल सेसन थिला आई होप के समस्त को भल लगी सेसन तो आंसर वुड बी बी तुमको आंसर देखा तो बी इज द करेक्ट आंसर समस्त देती वन सेकेंड तुम मो ना नहीं जाए तो अमृता सस्मिता दिबांशु संजीव शत्रु दीप्ति सनु प्रसाद समस्ते बी देइछन्ति तो बहुत बढ़िया आंसर तुम मैंने मते देइछ एक्यूरेसी लेवल जदि मु देखिबी मेजॉरिटी मतलब 99% एक्यूरेसी थिला आज पिला मानकर जदि मु तुम मानकर देखिबी कि योर एक्यूरेसी हैज इम्प्रूव्ड सो ड्रास्टिकली समस्तंकर मु कौनसी पर्टिकुलर पर्सन रो ना नउनी एवरीबॉडी हैज इम्प्रूव्ड सो मच ऑफ ड्रास्टिकल्स इन द सेशंस हम कहि परवा with the geography MCQ. Thank you everyone for joining the sessions. See you next session. Till then, thank you everyone. See you in the optional classes. Thank you everyone. Good night to all.